Hello guys, good evening. My name is Atala Shokraj and welcome back to my channel, Invincible SAP ERP Solution. So in last session, we had seen about the project preparation phase and what are the activities we need to be carried out and how much time requires to implement the project, like in the five phases, how much time requires to complete each project we had already seen. So today we will discuss about the business blueprint phase and also give the little bit brief introductions about the activate methodology and also to tell you that why SAP methodology is completely scrapped in SAP S4 HANA. So coming up with the business blueprint phase, what's it actually mean? So business blueprint means it's also means that the prototype or the understand the business and map it into the SAP. What prototype means and what understand the business and map it into the SAP. सपोज आपको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत पड़ेगी विदाउट दैट प्रॉपर प्लान यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट राइट सो दिस प्लान इज नथिंग बट द बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट सो इस प्लान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी पड़ेगी जो ओके देन वी डू रियलाइजेशंस तो व्हाट डज रियलाइजेशंस मीन तो रियलाइजेशन फेज में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं बट कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हमें बीबीपी की ज़रूरत पड़ती है बीबीपी डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम रियलाइजेशन फेज में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो हम आसानी से कर सकें एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट वी ओनली डील विद डॉक्यूमेंट्स हम सिर्फ बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं राइट Here, in this phase, we cannot do any configurations or any other things. We only do the requirement gatherings and how business process their runs and what we can actually maps in the SAP and what are the documents we need to create as a SAP consultant. This thing we will see. This thing we will create in BBP phase, right? So moving further, पहले हम देखेंगे व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएपी कंसल्टेंट इन बीबीपी फेज रूल्स एंड consultant participating in kickoff meeting. Next is scope document. In scope document is nothing but the questionnaire documents.
And third is understanding as is and to be preparing document. And fourth is preparing BBP document. And fifth is prepare ADS document. And sixth is gap analysis document. तो ये 6 पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। किक ऑफ मीटिंग्स में क्या होता है, स्कोप डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्वेश्चंस एंड आंसर पूछते हैं। एंड थर्ड अंडरस्टैंड एज इज एंड लाइक करंट बिजनेस हम उनका क्या है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं इन बीबीबी फेज। देन उसके बाद हम दिस एज इज को टू बी लाइक इन एसएपी में क्या होता है वो हम मैप करते हैं। देन प्रिपेयरिंग बीबीपी डॉक्यूमेंट्स लाइक देन प्रिपेयर केडीएस डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या गैप एनालिसिस होता है, ये सब गैप एनालिसिस मिलने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें बीबीबी फेज में हम देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट इज द किक ऑफ मीटिंग। अभी हम देखेंगे किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है, ठीक है। So I will erase this thing. So in kickoff meeting, the primary purpose of the project kickoff meeting is to get everyone on the same page and off to great start for the project. Like to get everyone on the same page and off to a great start. Like it's an opportunity to introduce the team and increase the understanding of the project so that work can begin as soon as possible. And it is nothing but a formal introduction. इस किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है, जो भी हर एक मॉड्यूल के सभी कंसल्टेंट है वो एक सिंपल प्रेजेंटेशन देते हैं, एंड यूजर भी प्रेजेंटेशन देते हैं। जस्ट इज लाइक ए simply kickstart to the project. This is nothing but the kickoff meetings. Okay. सो आगे बढ़ने से पहले हम पर्पस भी जान लेंगे कि बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज का पर्पस एक्चुअली क्या है, राइट। सो पर्पस ये है कि a business it is step to identify your business need, like goal and strategic plan, or establishing this business is essential because it will provide the framework for your business as you develop it. It's nothing but the common understanding of how the company intend to run to support their to SAP support their business. Or
The detailed informations, detailed documentations, we can say that the detailed documentations. So next thing is that the details documentation. In details documentations इसमें क्या करते हैं, जो कि वर्कशॉप होते हैं उस वर्कशॉप में यूजर भी होते हैं और कंसल्टेंट भी होते हैं। उस वर्कशॉप में हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और उससे हम डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशंस हम क्रिएट करते हैं। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप डॉक्यूमेंट। स्कोप डॉक्यूमेंट्स। So scope documents is nothing but the possibilities. What are the possibilities? What I mean actually, these documents, this scope document is consist of the questionnaires of entire business process. Suppose, uh, सपोज क्या है, मैनेजर्स जो है वो इतना बड़ा बिजनेस होता है कि हर एक प्रोसेस कंसल्टेंट को बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस बना के रखने हैं ताकि वो पूरे एंटायर बिजनेस के रिलेटेड हो। एंड क्योंकि मैनेजर को कुछ याद नहीं रहता है कि बिजनेस इतना बड़ा है तो हर एक चीज़ वो नहीं बता पाएंगे। तो उसे उसके लिए हमें क्या है ना, वो बिजनेस के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं ताकि हम हर एक क्वेश्चन से उनके बिजनेस की पूरी जानकारी ले सके। तो दिस क्वेश्चनर इज डिपेंड्स योर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट का सक्सेस है वो इस क्वेश्चनर पे डिपेंड करेगा। हाउ यू gather the informations, how better you gather the requirements, we can say, or how you better explain the scope, or how you demonstrate the project। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैनेजर्स हर एक चीज़ उन्हें उन्हें याद नहीं रहती है क्योंकि बिजनेस काफ़ी बड़ा है। So you have to make the questions and you have to ask to managers, so how many material type you use in the current business process, or the number range, what number range you want for each material type, for the separate material type. These are the things you need to be asked to managers and cover all the points, because the success of the project is depends on this questionnaires. That's why we create this scope of documents is nothing but what we can say that the possibilities. Okay. Next is as is and to be document. As is and to be document. So as is
as is and to be. So as is in how your current business is running without SAP, and to be is how customer business is going to be in SAP. जो हमारा प्रेजेंट प्रोसेस है, करंट प्रोसेस, वो हम SAP में कैसे मैप करते हैं, राइट? तो जो भी पिन पॉइंट्स हैं, पिन पॉइंट्स, उसका हमें क्या सॉल्यूशंस है और हम कैसे उसे SAP में मैप करते हैं, राइट? So this is as is and to be. So in as is, you have to understand the business process from the core team, right? तो इसमें क्या होता है, कस्टमर्स जो है वो बिजनेस प्रोसेस कैसे बताएगा आपको कि हम ड्रॉप ऑन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है एंड वी हैव द कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन, राइट? सो आफ्टर जो प्रोडक्ट में ड्रॉप ऑन मैन्युफैक्चर्स होता है वो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड हम उनसे पेमेंट नहीं लेते हैं तब तक जब तक कि वो मटेरियल इशू नहीं करते। सो जो भी अभी कोर यूजर ने जो बिजनेस प्रोसेस बताया एक सिंपल टर्म्स में बताया, बट हमें इजीली अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी प्रोसेस है। दे कैन नॉट टेल यू दिस इज द consignment process, subcontracting process, or the pipeline process we can use in the our business process. They use the simple business thing, and we need to understand what they talk, what process they are talking about, right? So in 2B, how your customer business is going to be in SAP, like how you map the customer business in SAP. These are the thing in 2B, and sometimes the customer requirement not match as per the SAP. Then what happening? You will find out some gap, right? Then you need to do gap analysis. करेक्ट। जो भी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट देते हैं वो हर बार एसएपी में नहीं होती है, तो दैट टाइम वी नीड सम फाइंड दैट गैप एंड दिस गैप, so now we need to prepare some gap documents, right? So in this the customer requirement only match 40 to 50% business as per the standard SAP. So, as a consultant, when you receive a requirement, what should be your approach? So, your approach will be first you have to do a SWAN analysis. What SWAN analysis means? So, in what S means is the standard. First, you have to check the standard, check with the standard, and whether you give solutions, right? Then work. This is W means workaround. तो स्टैंडर्ड रेसिपी में नहीं मिलता है, देन यू हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशंस एंड कस्टमाइजेशंस। तो वर्क अराउंड से भी काम नहीं होता है, देन यू हैव टू डू इन्हांसमेंट।
जो कि हम एफएस वगैरह बनाकर हम अबेपस से वो एनहेंसमेंट करवा कर लेते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट फ्रॉम द अबेप, राइट। एंड नेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल। तो इन्हेंसमेंट से भी काम नहीं हुआ तो हम नॉट पॉसिबल हम कस्टमर को बता देंगे, राइट। तो these are the thing you have to do when you gathers the requirement. Yeah, we have to create the BPD documents. So what BPD documents means? Let me clear first the screen. BPD document. So BPD documents is nothing but the business process document. तो बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, इससे रेफरेंस ऑफ फ्लो चार्ट। तो इस डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट के हिसाब से हम बिजनेस प्रोसेस मैप करते हैं। लाइक फर्स्ट फ्लो चार्ट्स आप सभी को पता होगा कि क्या है फ्लो चार्ट्स। फर्स्ट P2P प्रोसेस हमें मैप करना है, लाइक प्रोक्यू टू पे। तो हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, PR, ओके, देन RFQ, देन मेंटेन कोटेशंस, राइट, देन कोटेशन कंपैरिजन, राइट, देन PO, देन गुड रिसीव्ड। लाइकवाइज हम इस BPD डॉक्यूमेंट्स में, बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स में इस हिसाब से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। जो कि बिजनेस प्रोसेस होगा उसे हम एज अ फ्लो चार्ट हम इस डॉक्यूमेंट में हम मैप करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इज द KDS डॉक्यूमेंट। KDS document. KDS document is nothing but the key document structure. तो ये की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द रेफरेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। So in future, what are the configurations done? And that's thing we have to mention here, like number range, material type, what are the documents type। तो की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में क्या है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है, ताकि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस के जो भी पाथ है हम ये इस की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स में हम मेंशन करते हैं। सपोज एक मटेरियल का हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम मटेरियल टाइप, नंबर रेंज, ये सब चीज़ें, फिर सिलेक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ें हम मेंशन करेंगे। लाइक की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल टाइप हम मेंशन करेंगे, नंबर रेंज क्या होगा, ठीक है, फील्ड सिलेक्शंस क्या होगा, ये सब चीज़ें हम की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स में हम मेंशन करेंगे। इट्स नथिंग बट कॉन्फ़िगरेशंस, ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस स्टेप नीड टू बी मेंशंस इन द की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स। हर एक चीज़ का जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होगा, ठीक है, वो हम ये की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स में हम मेंशन करेंगे। हर प्रोसेस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, स्टेप है, वो हम की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स में हम मेंशन करेंगे, सिंपल।
is the gap analysis. This is the gap analysis. So, gap analysis is nothing but the gap documents contain what is not possible by SAP consultant. We will later do it in development, right? So, gap is nothing but no solution in SAP standard, right? No solution in SAP standard. For example, in standard SAP, in invoice address, as per the standard SAP is 4 line, right? So कस्टमर से दे वांट 10 लाइन, देन वी हैव टू डू द इन्हेंसमेंट. जो भी इन्वॉइस है उसमें सपोज 4 लाइन का एड्रेस है, राइट? तो कस्टमर वांट्स 10 लाइन एड्रेस बिकॉज एज पर द इंडिया द जो जो भी एड्रेस होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं. सो इट्स रिक्वायर्स द 10 लाइन आल्सो, but in standard SAP it's have only four line of address line, right? So customer requirement is that we want 10 line because their addresses vendor addresses is too lengthy. That's why we have to do enhancement. Yeah, that's this thing we cannot see in standard ACP. That's why we have finds that gap and we have to do this development. So note when you find the gap, what things we need to do. If you find gap, you need to do clear description requirement and if there is alternate solutions or not. If yes, then how much day estimate effort is required. Like functional mandates and technical mandates. तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए कितना एफर्ट्स लगेगा, कितने दिन लगेंगे एज अ फंक्शनल साइड और द टेक्निकल साइड्स, हमें क्या क्या लगेगा, कितने दिन लगेंगे, हम सभी चीज़ें एक क्लियर डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट में हम वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, राइट? सो आफ्टर डू दिस थिंग गैप एनालिसिस, सभी सभी चीज़ें बनने के बाद हमें साइन ऑफ डॉक्यूमेंट पे साइन लेना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? Sign off document. If we do not sign in sign off documents, what is never ending project क्या है? हम साइन ऑफ नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे साइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, सो इट्स नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट. कस्टमर के काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हम
सब मेट्रोलॉजी में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं इन बिजनेस ब्लूप्रिंट फेस दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द साइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर क्रिएशंस लाइक जो भी प्रोसेस है उसके बाद हमें हर डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेना ज़रूरी है। हम साइन नहीं लेंगे तो क्या होगा एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट्स डे बाय डे चेंज होती रहेगी और हम कंटिन्यूसली मैप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो भी प्रोसेस उन्हें बताया एग्जैक्टली हमें उस प्रोसेस के बाद हमें यूज़र का साइंस लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके। तो अभी इंटरव्यू की तरफ से जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यूअर क्या आपसे पूछ सकता है? एनी इशू यू हैव फेस इन द बीबीबी फेस बिजनेस ब्लूप्रिंट फेस में आपने कोई बड़ा इशू फेस किया है तो आपने हाँ बोलना चाहिए। क्या बोलोगे आप? लाइक वी नीड टू आंसर लाइक देर इज सम communications issue because there are different project which is from like Japan or any other country like we are facing the because they deal the business process in their own language and we are the Indians and we don't understand their language. These are the things you have to manage in the interview. आपने एज ए प्रोफेशनली आंसर देना चाहिए ना कि ना कोई कुछ भी आप आंसर ना दोगे तो आप इंटरव्यू उसे समझ में आ ही जाएगा कि आप फेक इस पे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने काफ़ी प्रिपरेशंस करना पड़ेगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो एक सिंपल आप चीज़ बता सकते हैं कि कम्युनिकेशंस इशू था, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डे पे आपने क्या क्या चीज़ें की, ठीक है? ऑन योर फर्स्ट डे व्हाट टू डू ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। तो आपने स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि मैं फर्स्ट डे से डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें आपने नहीं बोलना चाहिए कि फर्स्ट डे ये सब चीज़ें नहीं होती है। अ, आप इजीली सॉरी आप इजीली बोल सकते हैं कि फर्स्ट डे हमने प्लांट विजिट किया, राइट? क्योंकि फर्स्ट डे तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं करता है कि एज अ ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है क्या क्या चीज़ें हो रही है, सब सब हमें देखना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्लांट विजिट किया एंड वी हैव सेटअप एवरीथिंग मीन्स दे allocate a room and दे आल्सो allocate द टाइम बिकॉज जो भी कोर यूज़र होते हैं जो भी मैनेजर्स होते हैं उन्हें दे ऑलरेडी बिजनेस में काफ़ी एंगेज होते हैं, राइट? दैट्स व्हाई दे allocated टाइम like in a second half they will give 1 hours because उन्हें भी काफ़ी डेली के काफ़ी काम होते हैं, राइट? तो आपको 1 आवर्स ठीक है 1 आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। Yeah, these type of questions they need to ask in the interview, right? तो गैप डॉक्यूमेंट्स एक आप बना सकते हैं जब गैप डॉक्यूमेंट्स यानी कोई गैप्स आपको फाइंड हुआ तो आप सिंपल एक्सेल में आप इजीली बना सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट इन फर्स्ट कॉलम विच कौन से मॉड्यूल का है, राइट? देन रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट कॉलम में आप ऐड कर सकते हैं बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? देन एसएपी प्रोसेस एसएपी में है या नहीं है, ठीक है। देन गैप, देन बीपीडी रेफरेंस, ठीक है। देन एसिस रेफरेंस, देन सॉल्यूशन, राइट? सो एमएम मॉड्यूल का होगा तो एमएम मॉड्यूल आप इधर डालोगे। बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि परचेस और ऑर्डर में उन्हें एक टैब इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि जो भी मटेरियल का लास्ट ऑर्डर है वो देख सके। तो ये स्टैंडर्ड एसीपी में नहीं है तो हम इधर स्टैंडर्ड एसीपी में नो करेंगे। गैप फाइंड
हम यहाँ पे गैप फाइल्स डाल देंगे और बीपीडी बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स नंबर हम डालेंगे एज इस रेफरेंस नंबर डालेंगे एंड व्हाट सॉल्यूशंस वी हैव टू प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन वी हैव टू मेंशन इन द लास्ट कॉलम, राइट। तो इस टाइप से हम ऐसे कंसल्टेंट गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें खुद ही एक्सेल पे इसका स्टेटस हमें मेंटेन करना है, क्या दवा गैप डॉक्यूमेंट्स फाइंड हुआ है, राइट। तो हाँ, these are the thing in gap analysis documents. सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस मैं असेप मेटोलॉजी के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली क्यों असेप मेटोलॉजी एस पुराना में यूज़ होता है, वाई दे completely scrap that असेप मेटोलॉजी इन एस पुराना, राइट। और ये जो भी प्रोसेस है एक्टिवेट मेटोलॉजी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड असेप मेटोलॉजी। उसके बाद ही मैं एक्टिवेट मेटोलॉजीज पे वीडियोस बनाऊंगा। पहले हम सब मेटोलॉजी के 5 पेजेस हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्टिवेट मेटोलॉजी के बारे में आपको डिटेल्स में नेक्स्ट ये ख़त्म होने के बाद, पूरे 5 पेज ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, राइट। So today now we will see the brief introductions about the activate methodology, right? So activate methodology से पहले हम एक्टिवेट मेटोलॉजी हम कंपेयर करेंगे असेप मेटोलॉजी के साथ, ठीक है। तो असेप मेटोलॉजी क्या है ना, वी यूज इन असेप मेटोलॉजी, वी यूज इन R3 architecture structure, right? And next is ASAP methodology. As I said, ASAP methodology completely तो नहीं बोल सकते, but ASAP methodology is top in S4 HANA, and this SAP come with new methodology in S4 HANA, which is nothing but activate methodology. Now we will see about what is activate methodology, right? The activate methodology is come up with the 6 stage. First is discover, second is prepare, third is explore, fourth is realize, fifth is deploy, and sixth is run. Technically, it is 6 step, right? But basically, it was 4 step, which is start from prepare to deploy, right? But technically, we all knows that it's a 6 step, but basically it's a prepare to deploy step, which is nothing but the 4 step, right? And sub methodology is completely scrap in pivot methodology. Sorry, in S4 HANA.
So, ASAP methodology, we had already discussed. It's a work on the waterfall model. Uh, yeah. Once we take the requirement from the customers in the business blueprint phase, which we are supposed to discuss today. तो पहले हम जो रिक्वायरमेंट्स गैदर है वो हम कस्टमर से ले लेते हैं। सो टेल मी व्हाट यू वांट एंड इट्स टेक 3 to 6 मंथ। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सेड दैट द मैनेजर्स एंड कोर यूजर को काफ़ी वर्कलोड होता है, वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं डेली, दे गिव सम टाइम्स। इसलिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि 2 to 3 मंथ्स में कवर नहीं होती है। वो जो रिक्वायरमेंट वो उसका टाइम पीरियड जो होता है 3 to 6 मंथ्स आराम से ले लेता है। तो ये 3 to 6 मंथ्स में हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं और ना कोई कॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटी इसमें नहीं होती है। सो इन एसेट मेथोडोलॉजी द कस्टमर इंटरेक्शंस इज वेरी लेस, राइट। तो इसमें जो प्रोसेस है 6 मंथ में हम सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। And once we gather the requirement from customers, then we start working in the realization phase. So from this time period, the customer interaction is very less, and the customer don't know what is happening, and customer don't know about the SAP. That's why we didn't know what is happening. They don't know what is happening, and in ASAP methodology. Okay, क्योंकि उस पे एसएपी का नॉलेज नहीं होता, दे इवन सी द एसएपी प्रोडक्ट, बिकॉज व्हेन दे सी द एसएपी प्रोडक्ट आफ्टर द दे आफ्टर वी गो लाइव, after up to when we go live, that times they see, because these things they don't want now. Okay, बिकॉज़ वो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट अभी लाइव चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। पहले असट मेट्रोलॉजी में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, हम प्रोडक्ट को नहीं दिखा पाते थे। कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद हम रियलाइज़ेशन फेज़, ठीक है। देन आफ्टर गो लाइव के बाद ही हम उस प्रोसेस को क्या हमने मैप किया है, वो हम जो प्रोडक्ट है एंड प्रोसेस है वो हम 18 मंथ्स के बाद ही उन्हें देखने के लिए मिलता था। ये अभी ये चीज़ एक्टिवेट मेथोडोलॉजी में नहीं है। इन Now, he don't want to wait in from the 2015 from the SAP S/4HANA launch, because in realization phase itself, what happened? The customers see only in paper, in Word documents. The customers not getting the feel how our product is look like at the end. So SAP come up with the activate methodology, right? Which runs on the RAW model. So this model is work on the basis of path by path by path methods. Okay. तो एग्जाम्पल हम ये लेते हैं। सो एग्जाम्पल हम एक प्रोसेस का लेते हैं, P2 प्रोसेस ऑफ द थर्ड पार्टी प्रोसेस। सो इसी में क्या होता है, वी कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, देन वी इनिशिएट द रिक्वेस्ट एंड आफ्टर दैट वी डू टेस्टिंग, राइट। देन वी नीड टू वेट फॉर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और टू गो लाइव द प्रोजेक्ट टू शो दिस टेस्टिंग टू आवर क्लाइंट, right? So in ECC, we configure everything. Next, we do testing, and third, we upload the data, and then we go live. In this process, I cannot use the small part of the project. This is the complete drawback in ASAP methodology in SAC. So you have to use the product. You have to wait for the go live of the project. सो अभी S/4HANA में क्या होता है, हम कस्टमर से पूछते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेस चाहिए, वो बोले कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस चाहिए।
So as for HANA is come up with the cloud trail, right? They come up with the CLUD cloud trail. इस क्लाउड ट्रेल में क्या होता है, दे टेक अ मॉडल एंड शो टू अ कस्टमर्स द सपोर्टिंग प्रोसेस, या राइट। उसमें एक सपोर्टिंग प्रोसेस वो करके दिखाएंगे। इफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि सपोर्टिंग प्रोसेस में ये चीज़ें चाहिए, बट इन स्टैंडर्ड एसी में नहीं है, देन दे फाइंड अ गैप एनालिसिस। एवरीथिंग इज नॉट एज पर द कस्टमर, सो यू नीड टू फाइंड दैट गैप एनालिसिस, ठीक है। तो उसके बाद वो रियलाइज होगा, डिप्लॉय होगा एंड देन रन। तो आप जो प्रोसेस है, जो भी कस्टमर्स एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वो प्रोसेस हम क्लाउड ट्रेल में हम उसे दिखा सकते हैं और उसे रियलाइज, डिप्लॉय एंड देन यू कैन ये चीज़ें हम इसमें ईसीसी और द असफ मेथोडोलॉजी में हम लैक करते थे। दैट्स व्हाई वी कंप्लीटली स्क्रैप दिस प्रोसेस इन द एस4 हाना इन एक्टिवेट में मेथोडोलॉजी। दैट्स व्हाई ये चीज़ है कि हम ईसीसी में क्या होता था, डायरेक्ट बोले के बाद ही हम जो प्रोसेस है वो हम क्लाइंट्स को दिखा पाते थे। पर असफ मेथोडोलॉजी में एक्टिवेट मेथोडोलॉजी में ये सब चीज़ें नहीं है। हम एज पर हाना का जो क्लाउड ट्रेल जो प्रोवाइड किया है, हम उसमें प्रोसेस दिखा के हम इजीली वो प्रोसेस आगे रन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस ब्लूप्रिंट फेस। एंड जो भी एक्टिवेट मेथोडोलॉजी है, मैं आगे सब मेथोडोलॉजी के बाद ही आपको बताऊंगा। बाद ही वीडियो सब मेथोडोलॉजी के कंप्लीट होने के बाद ही अपलोड करूंगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस ब्लूप्रिंट फेस। If you like my video, keep a like and share it to your friend circle. Thank you, and thank you so much.